In the heart of the great crimson desert, where no stars dared shine, and the dunes whispered secrets older than memory, there stood a lonely oasis named Zahira. Azim Lal Sara के बीचों बीच, जहां सितारे चमकने की जरूरत ना करते और रियत के टीले याददाश्त से भी पुराने राजों की सरगोशी करते, वहां ज़ाहरा नाम का एक तिन्हा नखलिस्तान था. Few dared approach it, for legend claimed it was cursed, guarded by the song of the sand glass, a melody that could trap a soul between moments, freezing it in time. चंद ही लोग इसके करीब जाने की हिम्मत करते, क्योंकि रवायत थी कि ये जगह लानत ज़दा है, रियत की घड़ी के नगमे से महफूज, जो एक रूह को लम्हों के दरमियान कैद करके वक्त में मंजमद कर देता है. In the port city of Bahjad, a clever young merchant named Nasim heard of this oasis while eavesdropping in a smoky tea house. बंदरगाही शहर बहजद में नसीम नामी एक होशियार नौजवान ताजर ने एक धुएं से भरी चाय खाने में चपके से ये नखलिस्तान का जिक्र सुना. The tale spoke of a sand glass made from the tears of a forsaken queen and grains of time itself. कहानी में एक ऐसी रियत की घड़ी का जिक्र था जो एक तुर्क की गई मलका के आंसुओं और वक्त के ज़रात से बनी थी. Whoever possessed it could reverse one moment in their life. जो भी इसे हासिल करता, वो अपनी जिंदगी का एक लम्हा पलट सकता था. A gift and a curse. ये एक नेमत थी और एक लानत भी. Nasim, who had once lost his beloved sister to a fire he believed he caused, saw this as his only hope. Nasim, जिसने एक बार अपनी प्यारी बहन को एक आग में खो दिया था, जिसे वो खुद अपनी गलती समझता था, ने इसे अपनी वाहिद उम्मीद समझा. He packed his satchel with dates, spices to trade, and a hidden dagger disguised as a scroll. उसने अपने थीले में खजूरें, तिजारत के लिए मसाले और एक खंजर जो एक तुमार की शक्ल में छुपाया गया था, रख लिया. His journey was long, haunted by mirages that whispered in the voice of his sister. इसका सफ़र तवील था और इसे शराबों ने घेर लिया था जो इसकी बहन की आवाज़ में सरगोशियां करते. But he pressed on, guided by an old riddle carved into a silver coin she once gave him. लेकिन वो आगे बढ़ता रहा, एक पुरानी पहेली की रहनुमाई में जो एक चांदी के सक्के पर कंदा थी जो इसकी बहन ने इसे दी थी. The truth you seek is buried in sand, but only the still shall understand. सच्चाई जो तुम तलाश करते हो रियत में दफन है, लेकिन सिर्फ वही समझेगा जो खुद साकित हो. After weeks of solitude, he reached Zahira. हफ्तों की तन्हाई के बाद वो ज़ाहिरा पहुंचा. There was no water, no palm trees, only an ancient stone gate half swallowed by the dunes. वहाँ ना पानी था, ना खजूर के दरख्त, सिर्फ एक कदीम पत्थरीला दरवाज़ा जो रेत में आधा डूबा हुआ था. A single figure waited there, a woman whose face shifted constantly, young, old, sorrowful, wrathful. वहाँ एक ही शख्स खड़ा था, एक औरत जिसका चेहरा मुसलसल बदल रहा था, कभी जवान, कभी बूढ़ा, कभी गमगीन, कभी गुस्से में. She introduced herself as the guardian of the sand glass. इसने खुद को रियत की घड़ी की मुहाफिज के तौर पर मुतारिफ करवाया. You seek to change destiny, merchant? She asked, her voice a song woven with echoes. तुम तकदीर बदलने आए हो ताजर? उसने पूछा, इसकी आवाज़ एक बाज़गश्त भरा नगमा थी. I seek only a moment, Nasim replied, clutching the coin, to undo one terrible choice. मैं सिर्फ एक लम्हा चाहता हूँ. नसीम ने सक्का थामते हुए कहा, ताकि एक खौफनाक फैसला वापस ले सकूं. The guardian smiled sadly. Then you must pass 3 illusions, each born of your own heart. मुहाफिज ने अदासी से मुस्कुराकर कहा, तो फिर तुम्हें 3 फरीबों से गुजरना होगा जो तुम्हारे अपने दिल से जन्म लेते हैं. First, he stood in a burning room, his sister screaming for him. पहले, वो एक जलते हुए कमरे में खड़ा था, इसकी बहन इसे पुकार रही थी. This time, he saved her. इस बार उसने इसे बचा लिया. But when the flames died, she crumbled to ash, whispering, "You never forgave yourself." लेकिन जब आग बुझी, वो राख में बदल गई, सरगोशी करते हुए, तुमने कभी खुद को माफ नहीं किया. Second, he found himself a wealthy prince, beloved by all, yet utterly alone. दूसरे में, वो खुद को एक अमीर शहजादा पाया, सबका महबूब, लेकिन मुकम्मल तौर पर तन्हा.
Is this your wish? asked the guardian's voice. क्या ये तुम्हारी ख्वाहिश है? मुहाफिज की आवाज ने पूछा. No, he said. It's a lie dressed in gold. नहीं, इसने कहा. ये सोने में लिपटी हुई एक झूठ है. Third, he stood before a withered tree with a single fruit. तीसरे में, वो एक सूखे दरख्त के सामने खड़ा था, जिस पर एक ही फल था. Eating it meant forgetting his pain, but also her memory. इसे खाने का मतलब था अपने दर्द को भूल जाना, लेकिन इसकी याद भी. He hesitated, then turned away. वो रका, फिर मना मोड़ लिया. You have chosen to carry your truth, said the guardian, appearing once more. That is the true magic. तुमने अपनी सच्चाई को उठाने का इंतखाब किया है, मुहाफिज ने दोबारा जाहिर होकर कहा. यही असल जादू है. She handed him the sand glass, delicate, glowing faintly. उसने इसे रेत की घड़ी दी, नरम और हल्की सी चमक के साथ. Turn it, and time shall heed you. But know this, it only works once. इसे घुमाओ और वक्त तुम्हारी बात सुनेगा, लेकिन जान लो ये सिर्फ एक बार काम करता है. Naseem returned to Bajad. Naseem Bahajid वापस आ गया. As he entered the city, he heard cries. Another fire. जब वो शहर में दाखिल हुआ, उसने चीखें सुनी. एक और आग लगी हुई थी. Without thinking, he rushed in, saving a child who had been trapped. सोचे बगैर वो दौड़ता हुआ अंदर गया और एक फिंसी हुई बच्ची को बचा लिया. As he cradled the sobbing girl, he looked at the sand glass. जब वो रोती हुई बच्ची को गोद में लिए था, उसने रेत की घड़ी की तरफ देखा. It was empty. वो खाली थी. He hadn't turned it. उसने इसे नहीं घुमाया था. And yet, he had changed the future. और फिर भी उसने मुस्तकबल बदल दिया था. अगर आप वाकई सीखना चाहते हैं, तो अब कहानी दोबारा सुनें. इस बार सिर्फ अंग्रेजी में. देखें आप कितना समझते हैं. मगर इससे पहले वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. In the heart of the great crimson desert, where no stars dared shine and the dunes whispered secrets older than memory, there stood a lonely oasis named Zahira. Few dared approach it, for legend claimed it was cursed, guarded by the song of the sandglass, a melody that could trap a soul between moments, freezing it in time. In the port city of Bajad, a clever young merchant named Naseem heard of this oasis while eavesdropping in a smoky tea house. The tale spoke of a sandglass made from the tears of a forsaken queen and grains of time itself. Whoever possessed it could reverse one moment in their life, a gift and a curse. Naseem, who had once lost his beloved sister to a fire he believed he caused, saw this as his only hope. He packed his satchel with dates, spices to trade, and a hidden dagger disguised as a scroll. His journey was long, haunted by mirages that whispered in the voice of his sister. But he pressed on, guided by an old riddle carved into a silver coin she once gave him. The truth you seek is buried in sand, but only the still shall understand. After weeks of solitude, he reached Zahira. There was no water, no palm trees, only an ancient stone gate half swallowed by the dunes. A single figure waited there, a woman whose face shifted constantly, young, old, sorrowful, wrathful. She introduced herself as the guardian of the sandglass. You seek to change destiny, merchant? She asked, her voice a song woven with echoes. I seek only a moment, Naseem replied, clutching the coin, to undo one terrible choice. The guardian smiled sadly. Then you must pass 3 illusions, each born of your own heart. First, he stood in a burning room, his sister screaming for him. This time, he saved her. But when the flames died, she crumbled to ash, whispering, You never forgave yourself. Second, he found himself a wealthy prince, beloved by all, yet utterly alone. Is this your wish? Asked the guardian's voice. No, he said. It's a lie dressed in gold. Third, he stood before a withered tree with a single fruit. Eating it meant forgetting his pain, but also her memory. He hesitated, then turned away. You have chosen to carry your truth, said the guardian, appearing once more. That is the true magic. She handed him the sandglass, delicate, glowing faintly. Turn it, and time shall heed you. But know this, it only works once. Naseem returned to Bajad. As he entered the city, he heard cries, another fire. Without thinking, he rushed in, saving a child who had been trapped. As he cradled the sobbing girl, he looked at the sandglass. It was empty. He hadn't turned it. And yet, he had changed the future. आज की कहानी से आपने कौन सा इंग्लिश लफ्ज़ सीखा? कमेंट्स में ज़रूर बताएं.
ہماری ساتھی بننے کے لیے آپ کا بہت شکریہ. اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.